So dear students, now we are going to do some questions from the exercise 2.2, and now we have completed exercise 2.1. So in exercise 2.2 we will study here relations. What is meaning of relations? Number को पनि relation हुन्छ. Just like I have taken some examples here. You see here relation भन्ने चीज के हो? Two sets P is equal to एउटा सेट P छ अर्को Q छ. P में छ ABC एलिमेंट and Q has the elements Ali, भानु, विनय, चंद्र, दिव्या. अब यो दुईटा सेट को मिनिङ के छ? यहाँ दुईटा सेट दिइसकेपछि हामीले अस्ति पढेको छ कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ दिस टु सेट्स. हाउ टु फाइन्ड P क्रस Q भन्थ्यो. त P क्रस Q कसरी बनाउँछ? हियर फिगर मेड हियर ABC छ and 5 this set is this set P and other set is Q. So how to find this P cross Q? तो A to Ali order pair A Bhanu, A Binay, A Chandra, A Divya, like B Ali, B Bhanu. So we can make like this A Ali, B Bhanu, A Bhanu, A Binay, A Chandra. That means all. So the Cartesian product of P and Q has how many total order pairs? 15, because in the set P total 3 elements and set Q total 5 elements. So 3 into 5 it becomes 15, which are P and P cross Q. We can write like this. Now we get a subset. अब subset भन्ने चीज नयाँ त छैन यो previous exercise पढेको छ. subset भन्ने चीज के हो? If you have two sets given, so subset of first set, that means elements of all the elements belongs to second set. So here we get a subset of P cross Q को जुन subset पाउँछ त्यही relation हो. So now we get a subset of P cross Q which introduce a relation R between the first element X and the second element Y of each ordered pair XY. भन्नुको मतलब के छ? P में जुन एलिमेन्ट्स यसलाई X भन्दैछ, Q में एलिमेन्टलाई के भन्दैछ? Y. अनि फर्स्ट सेटमा X छ, सेकेन्ड सेटमा Y छ. एन्ड रिलेसन इज गिभिङ हियर. यस्तो रिलेसन दिएको छ XY such that X is the first letter of the name Y and X belongs to P, Y belongs to Q. अब यो रिलेसन कसरी हामीलाई यो रिलेसन बनाउँदा पाउँछ? सो R इज इक्वल टू अब X फर्स्ट सेट में छ, Y सेकेंड में छ. लेख्दैछ कि X इज द फर्स्ट लेटर अफ द नेम Y. दैट मीन्स अर्को जुन सेट का अली A लेटरबाट छ त A को रिलेसन अलीसँग हुन्छ, B को रिलेसन कुनसँग हुन्छ? भानुसँग हुन्छ, फेरि B को रिलेसन विनयसँग हुन्छ, तर B को रिलेसन चन्द्रसँग हुँदैन. फर्स्ट लेटर लिनुपर्ने छ. C को रिलेसन चन्द्रसँग हुन्छ, दिव्याको छँदै छैन. सो we have the relation R equal to A Ali, B Bhanu, B बाट भानु भयो, B Binoy, C Chandra. So we have how many? 4 ordered pairs here. 1, 2, 3, 4. It is the relation. So one visual representation is giving here. A visual representation of this relation R, which is called an arrow diagram पनि एउटा मेथड छ. अर्को दुईटा हामीले अस्ति पढेको छ रोस्टर फर्म एन्ड सेट बिल्डर फर्म. These are 3 methods to denote the relations. So suppose we have P and Q. How to define this relation between them? A to Ali, but A to Bhanu it is not possible. A बाट Ali हुन्छ, B to order pair Bhanu and also B to Binay. यो रिलेसन भयो. C का रिलेसन चन्द्रसँग भयो, तर C को रिलेसन दिव्यासँग भएन. त इट इज द रिलेसन बिट्विन these two sets. Now we will see next definition, short definition of relations. So here let A and B, there are two sets, be two non-empty sets, then any subset of Cartesian product A cross B is called a relation. भन्नुको मतलब के छ? जुन हामी A cross B त निकाल्नै पर्छ कुनै रिलेसन को लागि. A cross B को जुन सबसेट हुन्छ that is known as relation. And the second element is the image of the first element. जुन सेट को जुन दुईटा एलिमेंट हुन्छ, सेकेंड एलिमेंट के हुन्छ? फर्स्ट को. सेकेंड एलिमेंट के हुन्छ? फर्स्ट को इमेज भन्छ यो. सेकेंड एलिमेंट इज द इमेज अफ द फर्स्ट एलिमेंट.
अब रिलेसन सँगै दुई तीनवटा डेफिनेसन अझै छ। नेक्स्ट डेफिनेसन डोमेन, DOMAIN डोमेन। डोमेन मिन्स जुन फर्स्ट एलिमेंट कुनै आर्डर पेयरको जुन फर्स्ट एलिमेंट हो लाइक ABBC, first element of the ordered pairs are known as domain. The set of all first elements of the ordered pairs in a relation R from a set A to a set B is called the domain of relation R. कुनै पनि जुन हामी ordered pair पाउँछ जुन उसको first element हामी छानेर लेख्दाखेरि domain भनिन्छ। Range, how to find range? The set of all second elements. Second element means if we have this relation, second element are Ali, Bhanu, Binoy, Chandra, they are known as the domain. And what is range? The set of all second elements in relation R, in the set of all second elements relation R में जुन second element हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? रेंज भन्छ। सो चेक वन्स अगेन, डोमेन के पायो? फर्स्ट एलिमेंट आर्डर पेयर को जुन हुन्छ त्यसलाई हामी डोमेन भन्छ। रेंज के कसलाई भनिन्छ? सेकेंड एलिमेंट्स of that any order pair known as range. And now third thing is codomain. Codomain is so codomain is the whole set B is called the codomain of this relation R. हाम्रो में कुनै सेट दिएको छ, if any set A and B are given, so second set जुन हुन्छ B, whole set, second set B को जतिवटा एलिमेंट्स हो सबैलाई के भन्छ? कोडोमेन भन्छ। and range is, it is that symbol of the proper subset. Range is subset of the codomain. That means range में जतिवटा एलिमेंट हुन्छ सबै एलिमेंट कोडोमेन में पाउँछ। Now see the example number 7, so it will more clear to you. Example 7 छ कि let A is equal to 1 2 3 4 5 6, define a relation R, define relation R from A to A. आपनो का आफैसँग A to A by R रिलेसन के छ? XY such that Y is equal to X plus 1. That means एउटा सेट A छ, A को रिलेसन A सँग माने first A and second is also set A, and condition is given here XY such that Y is equal to X plus 1. So depict this relation using an arrow diagram. And now second is write down domain, codomain and range of relation R. So first of all we should make the relation. अब यो A में पनि X हो त्यही A में Y पनि हो, but how here getting Y is equal to X plus 1. यानी फर्स्ट में हाम्रो X आउँछ, त X में सपोज 1 जब राख्यो, यहाँ X में 1 राख्दाखेरि Y कति हुन्छ? Y is equal to X में 1 हाल्दाखेरि 1 plus 1, that means 2. तो Y कति आयो? 2 आयो। फर्स्ट ऑर्डर पेयर। सेकेंड त्यस्तै X में 2 राखूँ, X को प्लेस में यो, X को प्लेस में 2 राख्दाखेरि 2 plus 1 3, यानी Y 3 पायो एउटै अर्डर पर। नाउ नेक्स्ट X is putting 3, त 3 plus 1 कति हुन्छ? 4, Y 4 पायो। त्यस्तै अर्को यहाँ 3 राख्यो, अब 4 राखौँ, 1 पनि भयो, 2 पनि भयो, 3 पनि भयो, 4 राखौँ। 4 राख्दाखेरि के हुन्छ? X में 4 राख्दाखेरि 4 में 1 जोड्दा 5, Y is getting 5, तो यो 4 5 पायो। फेरि नेक्स्ट में के राखौँ? 5 राखौँ, तो X में 5 राख्दाखेरि 5 plus 1 6, X यहाँ 5 राख्यो, फर्स्ट में X हो, सेकेंड में Y के हुन्छ 5 plus 1 6 हुन्छ। अब हामीले 6 राख्नु पाउँदैन, 6 plus 1 राख्दाखेरि 7 हुन्छ, बट 7 दिस एलिमेंट 7 डजन्ट बिलोङ टु दिस सेट A, त्यसले गर्दा हाम्रो यो अर्डर पेयर पायो। 1 2 2 3, 1 राख्दा 2 पाउँछ, 1 राख्दा 1 plus 1 2, फेरि 2 राख्दा 2, X को प्लेस में 2 राख्यो त 2 plus 1 3, 3 राख्दा 3 plus 1 4, फेरि X 4 राख्यो त Y कति हुन्छ? 4 plus 5, फिर X को प्लेस में 5 राख्यो, 5 plus 1 6, these are the order pairs of, so it is the answer, it is the relation 1 2 3 4 5 ordered pairs. Now number question as is here, depict the relation between using an arrow diagram. अब relation 1 को relation 2 सँग छ, that means 1 को relation 1 सँग छैन, 1 को relation के सँग छ? 1 को relation 2 सँग छ, फेरि 2 को relation 3, 2 को relation 3 सँग छ, 3 relation 4, 3 को relation 4,
4 relation 5, 5 relation 6. So it is the arrow diagram method. Now second is asking here, write down domain. अब डोमेन बनने चीज क्या हो, डोमेन मीन्स बाय द डेफिनेशन डोमेन first elements 1 2 first element of the order pair 1 2 3 4 5. So write here 1 2 3 4 5. रिलेसन को जो ऑर्डर पेयर पाउँछ उसको फर्स्ट एलिमेंट छानेर लेख्नु पर्यो, त्यसलाई डोमेन भन्छ. नाउ नेक्स्ट इज रेंज. रेंज हाउ टू गेट सेकेंड एलिमेंट्स 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6 is the range of the relation. डोमेन फर्स्ट एलिमेंट छानेर लेख दियो, रेंज सेकेंड एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर को छानेर लेख्यो. इट इज द these are the answer of the example 7. Now see the question number 1 of the exercise 2.2. Let a is equal to 1 to 3 and so on up to 14. Define a relation R from A to A by R is equal to, condition is xy such that 3x minus y is equal to 0 where xy belongs to A. जुन एलिमेंट्स x भनेको x पनि त्यही हो, y पनि त्यही हो. Both sets are same A. So relation means we should first find that ordered pair of the this product of the ordered pair of the this Cartesian product. So 3x we have the set A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 and so on up to 14. So we shall consider the ordered pairs which satisfy 3x minus y is equal to 0. That means we can write here 3x is equal to y. 3x is equal to y हामीले पायो. अब हामीले इसको रिलेसन के पाउँछ, इफ वी पुट, अब x पनि यही हो y पनि इसमें छ, तो x में सपोज x को प्लेस में 1 पुट गर्यो, सपोज 3 into 1 x को प्लेस में 1 पुट गर्यो, दिस 3 into 1 दिस इज इक्वल टू y. सो y 3 बन जा 3 इज इक्वल टू y. तो y कति पायो 3 एउटा अर्डर पेयर यो पायो. नाउ सेकेंड अब 2 राखूं, x को प्लेस में 2, तो x इज 2, x 2 राख्दाखेरि 2 3 जा 6, y आयो 6. आई थिंक अंडरस्टैंड दिस थिंग. 3x इज इक्वल टू y, x में 2 राख्यो तो 3 into 2 इज इक्वल टू y, तो x 2 राख्दाखेरि 2 3 जा 6 आयो. नाउ थर्ड पेयर फेरि हामी के राख्नु पर्यो, अब अर्को नम्बर राखौँ 3 राख्दा के पाउँछ, 3 राख्यो, x को प्लेस में 3 into 3 तो के पायो 9 पाउँछ. 3 राख्दा के पायो 9 पायो. नाउ नेक्स्ट 4 राख्दा 4 3 जा 12, 4 राख्दा के पायो 12 पायो. 5 राख्दा के पायो 3 into 5, that means 50. not possible because 15 is not the element of this set. तो हामीले 5 राख्नु पाउँदैन. we can write those elements which belongs to this set A. तो 1 राख्दाखेरि x में 1 राख्यो तो 3 1 जा 3, 2 राख्दा 2 3 जा 6 पायो y, फिर x में 3 राख्दाखेरि 3 3 जा 9 y पायो, x को प्लेस में 4 राख्दा 4 3 12 पायो. तो these are the ordered pair of the this relation. So it is the relation. And now next we should find a domain. domain भन्ने चीज के हो, domain अघि हामीले पढ्यो. domain भन्ने चीज के हो, फर्स्ट एलिमेंट अफ द ऑर्डर पेयर 1 2 3 4, यसलाई भन्छ डोमेन. 1 2 3 and 4, it is the domain. Now next is codomain. Just we have written in the definition about the codomain. codomain के हो, second set, first set is A, second set also the same, so second set is known as codomain. codomain is 1 2 3 4 5 6 7 up to 14. Now range. Range equal to second element of the order pairs 3 6 9 12. 3 6 9 and 12. So these are the answers of the question number 1. domain भन्ने के हो, first element of this relation.
डोमेन भन्छ, कोडोमेन के भन्छ, होल सेट अफ द सेकेन्ड सेट। कोडोमेन भन्छ रेन्ज इज द सेकेन्ड एलिमेन्ट अफ द अर्डर पेयर्स 3, 6, 9, 12।